Very good morning, all of you. We are about to begin our session, which is to be taken by Anup Girdhar sir. I have just talked to them, and definitely they will join with us within few minutes. Good morning. Am I audible? Yes, sir. Yes, Yeah. sir. Thank you. Thank you. I also request to all the participants to kindly switch on their camera for a while so that we can see your lovely faces. ठीक हूँ And then after the session will begin, you can just off your camera also. बंद करो All the participants are चिपका दो requested, इसको please. It is for ऑन करके for attendance purpose also. ऑन वीडियो बोलना है Narendra Shukla sir, good morning. Anga ma'am, good morning. Sabhi ko good morning. Sun is facing this. No issue. भाई So very good morning to one and all present on this online platform here. So first of all, I would like to request Sanjay Sharma sir to kindly introduce the Anup Girdhar sir, and then after we will begin with the today's session. It is day 3, session first. Sanjay Sharma sir, please. Thank you, Prashant sir. Good morning, everyone.
On behalf of Government Polytechnic College Barmer, I, Sanjay Sharma, welcome Dr. Anup Girdhar and all of the participants of this FDP. It is matter of great pride for all of us that Dr. Anup Girdhar is a renowned cybercrime expert is with us and he will be taking our first session today. Dr. Anup is the CEO and founder of Sedulity Solutions and Technologies. Apart from this, Dr. Anup is the editor of so many international journals, Cyber Time newspaper and Cyber Times International Journal. He is a renowned cybercrime investigator and consultant, and he has a vast experience of 18 years of in the field of cyber security. He is ornated with MPhil and PhD degrees. He also has MCA, CH, SG, MCSE as additional educational qualification. And apart from that, he is also advisory member in institutions like IGNOU and TMV Pune. He is also the membership of some of the world-class institutions like Computer Society of India, ICTTF, Dublin, to name a few. He has also delivered the training session to the various investigation renowned agencies of India like CBI, CID, ATS, Indian Army, etc. You can see his articles in renowned national newspapers like Times of India, Hindustan Times, and Dainik Bhaskar. Dr. Anup has also shared his views on Z News, Sahara News, All India Radio, etc. Lots of his books on cyber topics, they are the part of the curriculum designed by IGNOU and TMV Pune. More than 50 of his articles are already been published, and he has conducted more than 500 seminars and webinars, and he has got the vast knowledge in the field of cyber security, cyber crime investigation, and cyber laws. Today in this session, Dr. Anup Girdhar will share his views on the cyber crime investigation and the cyber laws. Thank you. Over to you, Dr. Anup Girdhar. Yeah, thank you so much, sir. And very good morning to all of you. Thanks for giving me another opportunity to interact and to be a part of such a wonderful FDP being organized by all the your government Polytechnic of Barmer. So I really appreciate your effort, and that especially like on even Sunday and where the temperature is very low. And again, another part like where I mean, especially if we'll see in Delhi and other like cases were very high again. And again, still you guys are working. So I really appreciate your you know the concern about work and the way how you people are working. So it's a hands off to you. Thank you, and giving me the privilege also. Well, sir, as you said, topic. So topic is again very, very important and very concern, because once we talk about cyber laws, what is cyber law and how we have to get into this cyber law concept? See, in India, if we'll talk about internet, somewhere came across around 1994 from VSNL, Videsh Sanchar Nigam Limited. So they work out, and finally India got internet services. I remember that time where we use GVC modem or many other modems, and we got the job especially to deploy the internet services and do troubleshooting on that. So since 1994, if I remember, this internet started, and especially Anup sir, yes sir, if it is possible or if bandwidth allows you, kindly put on your camera, sir, so that more it would be more than a podcast. okay, just give me a minute. I might able to share the screen, but I don't know. Now let me see. It was started.
In case, I think, shall I reconnect for a while? Yeah, I think so. Just give me a minute. I'm just reconnecting. I think, I don't know why this, again, Microsoft team allowed earlier to access the camera, and now means either I don't have privilege or something else, because I cannot turn up my camera. Okay. So I think let me just try and reconnect again, I think. Just give me a minute. Yeah, is that okay? And am I audible also? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. Thank you. Thank you so much. So, see, the concern about, if we'll talk about cyber security, and especially if we'll talk about the laws, then the cyber law actually comes somewhere in the year of 2000, then, because internet somewhere come in the 1994. So the people who started working on internet, they were quite lucky because they can access whatever they want, right? And in the year 2000, it has already been notified like a lot of nuisance were created in the society, especially on this virtual world. So that has to be countered somehow. So that counterpart was started somewhere in the year of 2000, and now we are in 2022. So it means even after 22 years, we got even amendments in 2008. We got a lot of regulatory and some new regulations periodically. Means if you'll see in 2012, 2013, then even latest one more regulation which has also been introduced in the February 2021. So that was again with the IT Act Amendment 2008, and so on. So these are the different and various types of the notifications and some regulations has been introduced in India. But still, the problem is somewhere remains the same. Still, the problems are related to another issues and another challenges. So cyber law is means I really means if you really compare with some other act, even 1860 69 and such, the ancient acts were there, and still it is active and it's still working in the law, where IT can't be work like that. So in India we got act, and the best part is like our government is also active, very much active in this particular regard. And they used to come with the latest issues and latest laws, especially like there was amendment of Indian Evidence Act also in 2019, especially if you will see. So that is one of the another act where they introduced the a digital devices or digital evidences. So they basically talk about digital evidences and how we can produce the digital evidences in the court. So these are the areas where the things were introduced. So now the concern is we have to think about like how we can use this particular part
and what is the real gap. Because I think our right now the audience is more technical, they are tech savvy, right? And the topic which you have opted like related to cyber laws, so how we have to correlate these two things, because this is very important to understand, right? Means if I'll go with the advocates or judges or some lawyers who are going to attend the session, then we'll talk more legally. Instead of talking legally, I think we should talk more on then technically, and you'll be more happy to understand the concepts also on that basis. So I appreciate, like, think practically, like what is this cyber law all about, and how we are going to get the support from this particular part. Okay, so if I'll think from different aspects, we need to understand the model, like what are the current scenarios and how we can consider those current scenarios in this particular area. So I think if you remember in my previous session, I talk about like section 354D, which is stalking, cyber stalking, right? And in the same way, what was cyber stalking? I'll just brief you again. Otherwise, basically that is related to that, especially it is giving a support from the law side, that how we can give us some support to the women's of our country, the ladies of our country, citizen of our countries, who are facing challenges related to stalking. So someone who is talking to any girl, right? And if someone is stalking, then actually that creates a problem for everyone. And that basically how they identify and how they basically able to report. So I really recommend that you must keep some evidences, because without evidences it is quite difficult for everyone to understand what the things are going on in surrounding. So evidences, if you'll talk about, then and how to produce those evidences. Well, meanwhile, I just want to update one more important part to all of you. Please note down one good website. That website is cybercrime.gov.in. If you want, I'll write down somewhere. Otherwise, cybercrime.gov.in is one of the government portal which is started from Ministry of Home Affairs. So all the enforcement agencies are now working on this particular part, where the best part is, being a citizen, we can report any cyber crime, any financial fraud. We can able to report on this particular website, and that actually helps to every one of us if we are on facing any kind of challenges, and we are getting some information which is really dangerous for us, right? So how to get into this and how we can get some support from this website. You can even even we are tech guys, so if anyone who is really good in technology, even you can register yourself as a volunteer on this website. Okay, and being a volunteer, you can register, and you can support others also to register the complaints. But at the time, once you talk about the registration of complaints and all, then actually the concern is you have to be little technical, and you have to understand where is the evidence all about. Means if I'll talk about, say, somewhere from and where is my identity, which type of identities are there all about. So quickly, I would like to take one more case, and that is related to, like, what do you mean by the concept called cyber citizenship? Anybody heard about the concept of cyber citizenship? Yes, sir. Netizens, basically. Netizens. So how you become a cyber netizen? How and what are our roles and goals, and what are our responsibilities? Means if you really talk about, then actually you understand, like, what is this concept. So I'll even you want, I'll share a screenshot. I have a small PPT with me, and even I can share that part with you. Just give me a minute. Yeah. I think now you can see the screen. Can you see? It's visible, sir. It's visible. Wonderful. Okay. So the concept, as I'm talking about, what is cyber citizenship,
and if we'll compare it with cyber law and another content related to cyber warfare, cyber security, and cyber citizenship. So if you'll really compare these kind of things, so before I'll start, I'll just share one case with you. I think then you realize what I'm actually talking all about. In Delhi court, one of the honorable court, there was a very interesting matter which was going on, and that matter was related to the custody of one of the email ID. Right now, if I'll ask you, how many of you really have Gmail ID? Again, generally start with these kind of things so you know better. But I think in the previous session I had given you the example related to the technical part, like how the Google is actually stalking on us and they are monitoring our activities, right? But so really stop using it because you are not aware what you are doing. So again, why today I'm talking the legal terms and other concern. My question is, do you have the ownership of your own Gmail ID? Because actually what we did, we use this email ID as it is free. We are quite happy because of high technology, high security, and to use all these things in the back end and the network side. So our data is somehow secure enough. So my question is, if we have that level of data, so and I think you have already connected your Gmail ID with your banks, you have connected with the Aadhaar card and all the different identities wherever you are using. And even we are using such email IDs directly in our mobile phones also. And throughout the life, I think till the time that mobile works, or even you change the mobile, hardly matters, you're using those email IDs. I think now it's been more than a decade sometimes, even if I'll find out. So my only question is, even we are using these email IDs from so long, my question is, do you have the ownership of this Gmail ID, whatever being used by us? Anyone would like to answer this? Do you really have the ownership of this Gmail ID? Yes, please. I hope now you understood my question. क्या आप लोगों के पास Gmail ID जो हम यूज कर रहे हैं और जो हमारे डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं, राइट, जहां मेल्स एक्सेस कर रहे हैं, उसी आईडी से आप गूगल के आई थिंक मोर देन 200 प्लस एप्लीकेशंस हैं जो आप यूज करते हैं, है ना, और मोबाइल कनेक्टेड है, और यहां तक कि हमने वही ईमेल आईडी अपने बैंक अकाउंट्स में, अपने आधार कार्ड या और अदर डिफरेंट आइडेंटिटीज में सबके साथ कनेक्ट करके रखा हुआ है. सो माय ओनली क्वेश्चन इज, आपने इवन अगर कोई इनकम टैक्स रिटर्न भर रहा है, कोई अपना जीएसटी सबमिशन है, या जो भी आपका पूरा प्रोसेस है, सभी में आपने कहीं ना कहीं इन सबको, हर गवर्नमेंट आइडेंटिटी जहां जहां हमारी लिंक है, और उसके कम्युनिकेशन पर्पस के लिए हमने जीमेल आईडी का यूज किया हुआ है. माय क्वेश्चन इज, डू वी हैव द ओनरशिप ऑफ दैट ईमेल आईडी? Yes or no? No, sir. No. No, sir. No. It's with Google. No, sir. The ownership is No. with Google. Very good. So if the ownership is with Google, think practically, then why we are using it? Why we are using So it? no other Sir, option. because No other better option. because it is free and have lots of useful options. That's why we are using Google. The government server is, it is a very bit slow, and sometimes like it is difficult to log in. So that's why we are preferring Google over the government service provider. I can understand. Perfectly fine. So first, your answer is very correct, that actually we are not the owner of that email ID. However, we are still using it. Now think from the legal point of view. अभी क्या देखा है, जनरली ये एक ना रेगुलर हैबिट भी है. अगर हमसे कॉलेज में या यूनिवर्सिटीज में क्या देखते हैं, जैसे एक डिपार्टमेंट का एक ईमेल आईडी बना दिया और 5-6 कंप्यूटर्स पे एक्सेस दे दिया, तो भाई आप मेल चेक कर लेना, नहीं तो आप मेल चेक कर लेना, जो भी मेल चेक करेगा डिपार्टमेंट वाइज होगी क्वेरी, वो मेल्स को एक्सेस कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं. तो कई बार देखा है कॉमन ईमेल आईडी यूज किया जाता है डिपार्टमेंट के लिए, या 4-5 लोग जहां एक ही काम कर रहे हैं, तो सभी के पास उसका यूजर नेम पासवर्ड रहता है. ठीक है, तो एक यही डिस्प्यूट अभी कोर्ट में देखा गया.
The case was actually related to like one of the email ID. I think some benefit is to be given to the owner of that email, means the person who is using it. So in the legal terms, basically we are the end users and we are bound to access their services. We are bound to access their services as per the legal agreement. So in other way, we are in the contract with Google. Please try and understand now. And we are the end user. We signed the end user license agreement. So one of the license being issued by the Google to us, and we have abide and we have accepted after reading, means this is what like being predicted generally, but actually nobody read that agreement, and we simply click I agree and we proceed further. So the concern is like in this case, what happened? The two parties were trying to claim that really we have the ownership of that specific email ID, because I think some benefits would be there on that basis of that email ID. So the concern is who owned that email ID. Now how to produce that part. आज आपने बनाया, कल किसने बनाया, कोई KYC कनेक्टेड नहीं है. आज आपने अपने नाम से email ID बनाया, and in case suppose if that email ID get compromised due to any hacking activity, due to any reason, if your email ID get compromised and someone change the mobile number or backend permissions or privileges, right, or even alternate email ID or mobile number, then do you really believe that email ID goes to some other person or redirected to other person, or the person who initiated, who prepared that email ID, right? Do that person also have still the acting as a who basically prepared that email ID still have any rights to produce in the court, and how you can claim that email ID belongs to you? So can you imagine like what would be the result? And I mean, still I think the case is still going on, but due to COVID there was a delay for the verdict, but I think most of the things and trial was going on. So the concern was like think practically how you produce that part, means how you can claim that now this email ID really belongs to you. Do you have some evidences for that? And if you really have some evidences, how to produce those evidences in the court? So this is the real-time challenges being actually introduced nowadays in our society. Like we are on the digital world, we are using cloud computing, we are using almost the things are nowadays on cloud. If your data is in the cloud, who will claim and how you will claim that this data was being created by you? You are the owner of that data and being posted on the cloud server, and some web server or website or some business applications which were running. And today, if the admin accounts get compromised with others, right? So can claim that this email ID or this account or this any cloud ID belongs to that particular person? So how you will claim that part technically and obviously legally? So anyone can give some evidences, can discuss this particular part, this problem? Yes, sir. May I Please. say something? There is echo actually. There are two devices, so I am well. So, sir, there are two ways. First, the user has records of past printouts. Then he can that can act as an evidence that I have been using this account since past so many months or years. Secondly, okay. in case of say right to property. Let's take one by one. Secondly, sir, in case of right to property, when we prove this say use of particular thing, so there is something called easements, that is sukhadhikar. So under the right to property Act 1882, say for example, there are some things where the ownership is disputable. For example, there is a staircase, there is a way through a particular field, or these things are there. So if somebody is using that right undisputed through past many years, then that easement or there is also Easements Act. So under the easement or the Sukhadhikar Adhiniyam, this is there. So similarly, if somebody has been using something undisputably, then I think that could be taken as an evidence by the court that he is the owner and the other person
has taken, say, using it unauthorizedly, and say maybe say under section 66 IT Act, the hacking say offense may be made out. Okay, sir. Thank you. Great. Wonderful. So only the concern is, again, as you said very correctly, say we have certain sections. आप जो सुखाधिकार की बात कर रहे हैं और ये जो बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है सर, लेकिन जब हम बात करते हैं, जैसे आपने कहा कि हमारे प्रीवियस प्रिंट आउट्स हैं, है ना, यहाँ बात कोर्ट में आके किस चीज की आती है और जहां रुकती है, दैट इज बेसिकली द एविडेंस बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम योर साइड. व्हाट इज द ऑथेंटिसिटी ऑफ द एविडेंस? एक्चुअली कोर्ट्स में अगर आप आज भी देखें, जितने भी डिजिटल एविडेंसेस हैं, और मैं ये आपको एक अच्छे एक्सपीरियंस के बाद बता रहा हूं कि आप 80% कोर्ट में जो आपके एविडेंसेस प्रोड्यूस हो रहे हैं, so the purpose of the advocate is basically to means obviously defendant, right? What they say is that this evidence is should be null and void. So how they produce that evidence and they'll convert that evidence as a null and void should not be considered by the court. So for that they were only and only asking, and the basically the major challenge is what is the admissibility part, why to be admissible, and what is the authenticity of that evidence. तो आपने कहा जैसे हम प्रीवियस प्रिंट आउट्स लाते हैं, प्रीवियस प्रिंट आउट्स का क्या है, वो तो कभी भी बन सकते हैं, कहीं पे भी बनाए जा सकते हैं. उसमें कहीं जब तक वो पब्लिश नहीं है, कहीं पे उसकी कहीं कोई कॉपीराइट या कहीं कोई उसके कोई ऑलरेडी कहीं किसी के साथ कहीं एग्जिस्टेंस नहीं है, उस चीज को हम कैसे प्रोड्यूस करेंगे कि कहीं अगर हमने ईमेल आईडी लिया या हमारे ईमेल्स थे हमने प्रिंट करके रखा हुआ है, तो वो तो कभी भी, और वो हालांकि ईमेल्स होंगे या ईमेल डिलीट कर दिए गए होंगे या जो भी स्टेटस है ना. तो बेसिकली द कंसर्न इज like if even you use that email ID, you have the printouts for your name, लेकिन क्योंकि if the email ID was shared, let's say between 2 or 3 people, right, or the person who are using that email ID, तो वो किसी और के नाम पे भी या आपके नाम पे और मेरे नाम पे भी emails आ सकती हैं. So basically the challenge is who started that email ID, who owned that email ID. Ownership is not there, but who is the person who actually signed the user license, end user license agreement with Google. And on that basis, क्योंकि कंटेंट तो ऑलरेडी अगर ईमेल आईडी शेयर्ड था, सोचिए ना, क्लाउड सर्वर है, इसी को मैं क्लाउड सर्वर के हिसाब से भी लेके चलूं, तो क्लाउड सर्वर्स हम लोग आजकल क्या है, सर्वर्स बना रहे हैं, तो सर्वर्स के लिए हम क्या कर रहे हैं, कंटेंट हम बनाते हैं और हमारे डेवलपर्स लोग जो हैं, और उनको हम राइट्स देते हैं कि जाओ और आप अपना सर्वर पे डिप्लॉय करो, चेंजेस करो. सो बेसिकली देयर इज अ टीम हु इज वर्किंग बिहाइंड दैट पर्टिकुलर आईडी, let's say admin ID, or we have given some restricted privileges. That's what we are going to give. That is a concept of IAM also in cloud computing. That is identity access management. So identity access management is a very important and very crucial part in this particular area to justify the cyber authenticity. And whenever we are talking about especially at the citizenship or netizenship, so these are the questions generally comes in the court, that what is the authenticity of your records, right? What is the authenticity of the evidence being produced from your side? अगर आप कह रहे हो कि उसमें मेरा नाम है और ये मेल में आया हुआ है और ये मेल ऑनलाइन पड़ी भी है और मैंने ही एक्सेस किए, हाँ तो हो सकता है ना, वो राइट्स हमने ही आपको दिए थे, एडमिन ने दिए थे. सो एक कंपनी है और आप कहें कि ये तो कंपनी के नाम पे बना है, पर्सनल नाम पे बना है, सो देयर इज नो ऑथेंटिसिटी. That today even I can also create the account of your name with just jumbling of words and making some permutation combination. Even anyone can create the name of anyone else. मतलब आज आपको कोई किसी पॉलिटिकल लीडर या कोई भी एक साइंटिस्ट के नाम से अगर आपको अपना ईमेल आईडी बना के और उसे यूज करना है तो आप कीजिए. There is no restriction, there is no validation. Only the concern is that name or that ID should be available. So the concern is in this particular scenario where there is no KYC, where there is no linkage between Google and the person who signed the end user license. Later on, in case if any activity being held, अभी तो मैंने ये पॉजिटिव बोला, सोचिए नेगेटिव अगर होता है, any nuisance or any objectionable content being posted by that email ID, आपने कहा जैसे सेक्शन
66 में है हमारे पास provision. Obviously, IT Act Amendment 2008, Section 66 clearly says that there is a provision of hacking, and we can identify based on that hacking part, right? So if anything which is being hacked, और Section 66 को पढ़ने का बहुत अच्छा तरीका, आप Section 43 जरूर पढ़िए. Section 43 of IT Act Amendment 2008 में 10 सब क्लॉसेस दिए गए हैं, जिसमें हैकिंग को बड़े अच्छे से डिफाइन किया, अलग अलग पार्ट्स में डिफाइन किया गया. So any activity being performed under Section 43 of IT Act Amendment 2008, and if that activity was performed with ill will, with fraudulently, dishonestly, right, on that basis only we can able to file a section under the offenses that is in chapter number 11, and Section 66 is applicable on that ground. ठीक है जी, जिसमें 3 years imprisonment, 5 लाख रुपीस और बोथ का एक जो ऑफेंस लेवल पे उसमें प्रावधान दिया गया. और ये भी पॉसिबल है इस केस में, आप जो केस करेंगे और उसके अंदर आप सिविल सूट और क्रिमिनल सूट दोनों फाइल कर सकते हैं. सिविल सूट अगर आप फाइल करेंगे और सिर्फ सेक्शन 43 के ऊपर अगर आप बात करेंगे, तो कहीं कुछ आपके डैमेजेस हैं, सो इन केस इफ यू हैव सम डैमेजेस एंड यू वांट द कॉम्पनसेशन ऑन दैट बेसिस, so on that basis the best part is Section 43 says that you can claim the compensation up to 1 crore rupee, right? So the compensation is even up to 1 crore rupee, which comes under the Section 43 of IT Act Amendment 2008, but it is under penalty. There is no, it's a bailable sections, right? So under that section you can go and you can go for a civil suit, as well as you can file a criminal suit if it is ill will or something like that. And even this amount, the max limit of the maximum limit, that is of 1 crore, could be extended based on the request being filed by the complainant that they met more expenses than 1 crore. Then they can request to the court to appoint a commissioner to audit their evaluation part. So there is a provision also that they can request to the court that they should appoint a commissioner, and commissioner should be obviously from IAS or that level of person would be get appointed from Government of India, and the person who is on the government payroll, okay, on a very higher designation or above director or with good experience, so that they can able to evaluate the cost being actually born at the time of damages or due to any other reason. So whatever the cost is there, they have the rights to extend the cost of 1 crore rupee to up to 5 crore rupees. So they also have a maximum cap of 5 crore rupees. मतलब आप ये सोचिए, अगर आप आज किसी का मोबाइल फोन, मतलब ये तो आई थिंक कॉलेजेस में आप देखते ही होंगे, बड़ा कॉमन है और शायद हमने भी कभी ध्यान नहीं दिया, राइट? आज अगर मैं किसी का मोबाइल फोन बिना उसकी परमिशन से उठाऊं और एक्सेस करूं, और या उसका जो पैटर्न तोड़ रहा हूं या सिक्योरिटी एक्सेस कर रहा हूं या ओपन कर रहा हूं विदाउट देयर परमिशन, वो इस चीज का कहीं कोई सीसीटीवी फुटेज दे दे या इस तरह से कोई एविडेंस दे दे जहां मैंने एक्सेस किया और मैंने वो कंटेंट या कुछ डिजिटली पंच किए हैं, कुछ कीज या कोई वैल्यूज या कोई एक्टिविटी परफॉर्म की है, यदि आप ये चीज प्रूफ कर दें, राइट, obviously you can even file the civil suit on this ground. It is not ill will, but unintentionally if somebody did that. So unauthorized access, unauthorized secure access is also a simple part which is there. 43A का तो basic part ही यही है. तो आप समझ सकते हैं कि हम किसी का मोबाइल भी एक्सेस कर रहे हैं और हम किसी का ईमेल एक्सेस कर रहे हैं या हम किसी की कोई भी एक आइडेंटिटी और उसको अगर हम एक्सेस कर रहे हैं, तो वो जो भी हम विदाउट द परमिशन ऑफ द ओनर और द कंप्यूटर नेटवर्क इंचार्ज, तो यहाँ पे ना बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कंप्यूटर नेटवर्क इंचार्ज के ऊपर भी. तो हम लोगों में अगर कोई नेटवर्क इंजीनियर या जो हमारे जो नेटवर्क संभाल रहे हैं, उन लोगों के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड इट इज मैंडेटरी फॉर देम टू कीप द लॉग्स of each activity. Please remember, otherwise they'll be in trouble, right?
सो बिकॉज अगर कहीं कोई इंसिडेंट हुआ तो वो इंसिडेंट की रिपोर्ट आप ही से मांगी जाएगी, right? And if you are unable to produce that report and it is liable according to the government of India, then yes, you will be penalized for that particular part as well. आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन कोई इंसिडेंट हुआ, लेकिन वो इंफॉर्मेशन आपसे मांगी गई और आप उसको प्रोड्यूस करने में नाकाम रहे, या किसी वजह से हम उसको सामने उसको on time whenever the reports are required and unable to submit that reports or that information is again under penalties, and that has already been mentioned in IT Act. तो कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ ये कंसर्न है क्या, हम किस तरह की बात कर रहे हैं, और जहां पे हम आइडेंटिटी स्पूफ की बात कर रहे हैं, आइडेंटिटी हैकिंग की बात कर रहे हैं, राइट? तो ये कुछ सेक्शंस हैं जिसके ऊपर अगर आप ध्यान से देखें तो जो आपने सर बताया था अभी, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स का, उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, यहाँ कोर्ट में चैलेंज इस चीज का है, इस चीज का नहीं कि हमारे पास एविडेंसेस नहीं है, लेकिन वो एविडेंसेस कब प्रोड्यूस किए गए, वो फॉल्सली प्रोड्यूस्ड है, मतलब फिर से वही बात है, ट्रू पॉजिटिव्स या फॉल्स पॉजिटिव्स। पॉजिटिव्स तो हैं, इसलिए आपने वो एविडेंसेस प्रोड्यूस किए, लेकिन वो प्रोड्यूस करने का तरीका क्या है, दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज, that actually creates a problem whenever we are into as we are on ongoing on cyber citizenship. So where is the citizenship and what are my rights? If we'll really talk about these things, then you can understand that what are my rights and how can I produce my evidences. आप शायद आप मेरा कंसेप्ट समझ रहे होंगे कैसे और क्या काम होता है, राइट? और एक बड़ा प्रॉब्लम है हमारे सोसाइटी में, स्पेशली मैं जो बताना चाह रहा हूं, आप इस चीज को बड़े ध्यान से समझिएगा। बीइंग अ आईटी एक्सपर्ट, हमें लगता है कि वी आर वेरी गुड इन टेक्नोलॉजी। यस वी आर, देयर इज नो डाउट इन इट। यू कैन आर्ग्यू, यू कैन गिव योर सजेशंस to the advocates and to all the legal fraternity, but the only problem is we are not the advocates. Please try and understand, we need to understand the standards, the protocols of court, and to produce that information according to the channelized manner, according to the standardization part, where for us to generate the evidence is not a big deal, but to make it admissible in the court is really a big deal. So on that basis, we need to understand the concept of cyber forensics. We need to understand the concept of other evidence collections and what are my different types of evidences, like whether it is a primary evidence or is it a secondary evidence. Like, I'll give you a small example of CCTV footage. Now, अभी पीछे केस भी हुआ और आई रिमेम्बर किसी के एक मतलब सीसीटीवी वीडियो था, कैप्चर हुआ, और वो जो ये नार्कोटिक्स ड्रग्स डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो सिविल में आए, बड़ा ड्रामेटिकल फॉर्म था। एक दिल्ली में देखा, एक अपार्टमेंट है, उसके बाहर एक कार पार्क है, एक लड़का सामने से ट्रैवल करता हुआ आ रहा है, जो ड्राइवर सीट पे बैठा है उसको देख के वो बाहर निकला, उससे हेलो किया और उसको भी आगे कार में बिठा लिया। वो दोनों आगे कार में बैठे थे और पीछे से एक कार पहले चली गई, उसके पीछे से कोई स्टॉक कर रहा था, वो पीछे से कार चली गई और वापस ठीक 1 मिनट 2 मिनट बाद वो कार वापस आई, उसमें से 4 लोग निकले, चारों लोगों ने उन दोनों को निकाला उस कार में से, अपनी कार के सीट के पीछे बिठाया, और वो लोग कोई जो आए थे उनमें से कोई एक आदमी उतरा और वो उनकी कार लेके भी चला गया। So that was very dramatically presented and that was there. Now further, it has been concerned that there was a FIR registered on the name of the person who traveled towards that car, and that guy was a supplier of some drugs. उसके पास से जी इतना ज्यादा एक level of drugs बरामद हुए। Now, where is the evidence? The evidence is actually in the digital form. So now because everybody start looking forward कि वो उन्होंने अपनी जो उनकी family थी
they start getting into this and trying to get like kab hua, kaise hua, and they try to recognize. They found one camera was there behind the one residential society, and they approached to residential society के सर हम क्या आपका वो कैमरा देख सकते हैं, ऐसे ऐसे हमारे बच्चे के साथ हुआ है, पुलिस उठा के ले गई और वो इनोसेंट है. This is the case all about. So now from the defendant side, they were working and they were trying to produce the evidences. अब प्रॉब्लम यहाँ है कि वो लड़के की जो बड़ी सिस्टर है, आई एम जस्ट गिविंग यू अ केस स्टडी सॉर्ट ऑफ, राइट. So she is actually a one IT guy, IT girl, and working in one of the renowned organization and having the experience of more than 10 years or so. So according to them, the data which is there in the CCTV, and they found this footage, and they feel this, let us say, contest on this footage. क्योंकि इसमें कहाँ दिख रहा है कि उसके हाथ में कुछ है, कोई बैग नहीं है, कोई ऐसा नहीं है, तो उसके पास कहाँ से आएगा इतना सारा जो ये क्लेम कर रही है पुलिस. So they want to contest on that particular part. और उसके जो evidences, और ये तो इसको किडनैप करके लेके गए, सिविल ड्रेस में थे, ये था वो था and all. So they have this kind of thing. But where is the footage? So something is there in the footage. So that family requested to the residential authority, can you give us the hard drive of this the CCTV DVR? So what they requested to collect the hard disk. वो कहते हैं hard disk में video होगी और already है. So what they did, officially they make the payment. उन्होंने उनसे एक चालान लिया, एक प्रॉपर उसकी पेमेंट रिसिप्ट ली, और उसके बेसिस पे उन्होंने उनसे हार्ड डिस्क ले ली. ठीक है जी, हार्ड डिस्क ले ली, और उस हार्ड डिस्क के में से उन्होंने वीडियोस कैप्चर करी. अब दो चीजें करी उसी समय, खड़े खड़े उन्होंने पेन ड्राइव्स में एक वीडियो ली, और दूसरा उन्होंने वो हार्ड डिस्क भी ले ली. तो पेन ड्राइव्स में वीडियो कैप्चर करके निकाल ली, एक चीज. अब हार्ड डिस्क ले ली, दूसरी चीज. अब हार्ड डिस्क जब आप, अब आई डोंट नो वेदर यू रियली नो दैट पार्ट और नॉट. Technically the file system architecture is completely different for that such hard drives, right? It is not NTFS, it is not FAT, it is not EXT, it is not HFS. They have their embedded file system architecture. जब embedded file system architecture होता है तो आपको CCTV से हार्ड डिस्क नहीं निकालनी होती. ये जो DVRs होते हैं इसमें से हार्ड डिस्क नहीं निकालनी होती, राइट. अब टेक्निकली है, और उन्होंने वो हार्ड ड्राइव निकलवा ली, और उसके बाद लगे डेटा रिकवर करने, और वो क्या दिखा रहा है, ब्लैंक, 0 बाइट, कुछ भी नहीं है उस हार्ड ड्राइव में. क्यों नहीं है? डेटा तो वही था, उन्होंने उसी पेन ड्राइव से निकाला था, उन्हीं के सामने उन्होंने निकाल के हार्ड ड्राइव उनसे ले ली थी, पता नहीं कैसे कन्विंस करके ले ली थी, राइट. और चलान भी ले लिया और सब कुछ कर लिया. एंड नाउ दैट वाज अ चैलेंज दैट दे कांट एबल टू एक्सेस द डेटा फ्रॉम दैट हार्ड ड्राइव. ऐसा कैसे हुआ? कोई सोच सकता है? कंसेप्ट समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि वहां पे वो एम्बेडेड ओएस यूज होता है, जो आपके सीसीटीवी फुटेज में जो डीवीआरस का वो है. और अकॉर्डिंग टू डीवीआर आपको सिर्फ हार्ड ड्राइव बाहर नहीं निकालनी है, आपको उसका पूरा जो डीवीआर है, आपको उस हार्ड ड्राइव को डीवीआर के साथ लेके आना है. सो वेयर इज द एविडेंस? और वो आईटी, और यही सबसे बड़ी उन्होंने मिस्टेक कर ली कि उन्होंने हार्ड ड्राइव बाहर निकाली, तो डिटैच किया. नाउ द कंसर्न इज व्हाट इज द ऑथेंटिसिटी, कि इस पूरे पीरियड में उन्होंने उस हार्ड ड्राइव के अंदर टैंपरिंग नहीं करी. द फॉरेंसिक्स इज अ लिटिल डिफरेंट. सो ये हमें ना माइंडसेट क्लियर करना है, क्रिएट करना है, कि हम आईटी वाले इमीडिएटली काम करना शुरू कर देते हैं, अरे हार्ड डिस्क में डेटा हार्ड डिस्क से निकाल लेंगे. फिर नहीं निकला तो डेटा रिकवरी वाले एप्लीकेशंस लगाने शुरू कर देते हैं. जी नहीं, दैट इज नॉट एट ऑल अ राइट वे एंड राइट अप्रोच. It is completely you should not go in this way, in this direction. First you have to try to seize that there is a procedure of seizure. For seizure we have to go for the DVR seizure, not the hard drive seizure. You are not supposed to detach the hard drive from that particular CCTV or so, or this DVRs or NVRs or whatever nowadays you are using.
So that has to be within that particular part. We need a complete DVR, and that DVR need to be taken to the forensics lab, where forensics lab people would work out and they check the status of that DVR, whether it was in the working condition or not. And their job is to generate the evidences as per the claims, as per the request being generated from the party, where at this stage they have to contest the part. So I even recommend, do not carry the, आप कस्टडी में ले सकते हैं, एक अलग बात है, आप पूरा डीवीआर ले सकते हैं, लेकिन सोचिए ना, अगर हम रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स के अगर हम डीवीआर लेने लगे तो कभी डीवीआर वहां लगे नहीं होंगे, वहां सब लोग अपने एविडेंस मांग रहे होंगे. So it is again is not the right way and right approach to collect those evidences in this particular form. So it means we are not carrying the primary evidence. So if you have a DVR, then it is acting as a primary evidence, but it has to be with the procedure, with the proper procedure. It has to be, with the legal channel. It has to be seized under a panchnama, and the details has to be given to their concerned authorities. And only the forensics lab people should generate the report on that basis, so that the concern or that evidences to be produced in the court. Right. Second part, even if you can't carry the DVRs, then if you are not able to carry the DVRs, then the person who is working over there, the person who is working, who is handling, or the admin or the owner of the DVR, you have to connect with them and you have to ask for a specific recording. जब आप वो रिकॉर्डिंग उनसे लेंगे पेन ड्राइव्स में, याद रखिए अगर आपकी 5 मिनट की लेट्स से आपकी रिकॉर्डिंग है, तो आपको आधा घंटा पहले और आधा घंटे बाद की भी रिकॉर्डिंग वो कंटिन्यूटी चाहिए, बीच के 5 मिनट नहीं, क्योंकि वो एब्स्ट्रैक्टेड डेटा नहीं चलेगा. आपको उससे पहले की कंटिन्यूटी और उस इंसिडेंट के बाद की कंटिन्यूटी भी उसके अंदर होनी चाहिए. So that must be in the sequential order of the continuity, and then only you can consider it as a evidence. But please remember that would be considered as a secondary evidence. And whenever we are going to produce these secondary evidences to the court, in that case, that content has to be, there is a one certificate of Indian Evidence Act, Section 65B. Please note down. So Indian Evidence Act, Section 65B, का आपको certificate लगेगा. That certificate is to be duly signed by the owner of that CCTV owner or any IT head who was capable enough technically to extract that particular video with intention, without any pressure, without any personal cause or any personal reason, that another third person should sign, and they'll say that from so long that person was working. So ये पूरा एक अंडरटेकिंग देगा कि मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, इन्होंने मुझसे ये वीडियो फुटेज मांगा और मैंने निकाल के दे दिया. DVR is working in a proper way, in a proper manner, and the content has been collected and given and shared to so and so in these number of pen drives. So that level has to be generated, that authenticity level has to be generated, and that secondary evidence with Section 65B certificate need to be placed, and then only your evidence to be produced and become admissible to the court. हालांकि इसके बाद भी इस पे कंटेस्ट होगा, इस पे भी चैलेंज होगा कि आपका कंटेंट क्या है, किस तरीके से लिखा हुआ है. So please try and understand, we all are IT guys and we are again surrounded with almost all the cyber crime. यानी आज तो ये हो रहा है ना, मैट्रिमोनियल केस है या कोई भी केस है और बैकएंड में एविडेंस क्या है, डिजिटल एविडेंस. क्यों, कहीं कोई ट्रायंगल होगा, और ट्रायंगल होगा तो वो जो डिस्कशंस होंगी वो व्हाट्सएप चैट हो सकती हैं, वो फेसबुक चैट्स हो सकती हैं, वो पर्सनल मैसेजेस, ईमेल्स हो सकते हैं, कोई कॉन्वर्सेशन हो सकती है किसी ऐप का यूज करके जिसमें कोई ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट होगा और वो एक एविडेंस है आप जिसके बेसिस पे क्लेम करना चाहते हैं. तो प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, इवन द स्पाउस आर नॉट अलाउड टू एक्सेस द फोन्स विदाउट परमिशन. Even if you are under dispute or not, but still we need to take the permission. जो उसके हम अपना एकदम वो कहते हैं ना, समझते हैं स्वामित्व हम प्रोड्यूस करते हैं, and we say no, come on, this is my property and I have gifted, so
I am the owner of this particular part. जी नहीं, अगर किसी की आइडेंटिटीज उसमें इन्वॉल्व हैं तो वो उसका डिवाइस है और आप उसमें से उसकी इंफॉर्मेशन को निकाल के आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते, कोर्ट में नहीं दिखा सकते विदाउट देयर परमिशन, बिकॉज वो सबसे पहले हैकिंग अटेम्प्ट में काउंट होगा, ना कि आपके फेवर में कि ये एविडेंसेस आपको उसके व्हाट्सएप चैट्स में और उसमें मिले. So the challenge in the courts are little different, and being into cyber citizenship means, if we really talk about, then where are we all landed? What are the kind of challenges? So legal and technical challenges are different. Please try and understand. ठीक है, तो हमारे पास साइबर लॉ तो है और आपको बड़े सारे इसमें केस स्टडीज और बड़े सारे इंफॉर्मेशन मिलेंगे, इसलिए मैंने आपको कुछ यूज केसेस बताए. ठीक है, कुछ ऐसे केसेस आपको साथ डिस्कस किए ताकि आपको पता चले एटलीस्ट के हो क्या रहा है हमारे सोसाइटी में. राइट, व्हाई द केसेस आर स्टिल पेंडिंग वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट डिजिटल एविडेंस एंड इट इज 100% फुल प्रूफ एविडेंस. सो इफ इट इज अ फुल प्रूफ एविडेंस, यानी आज अगर आपने किसी को एक मैसेज भेजा, सो हम लोग ना कॉलेजेस में कुछ पोस्टर्स भी लगवाए थे हमने, मुझे याद है, 1 dirty SMS equals to 3 years jail. Can you imagine? So one poster is enough to, with respect to present in the college authorities and in the college campus, that everybody is on WhatsApp, everybody is on Facebook, and in case if somebody is trying to create a nuisance, passing any objectionable words or any content, then it is actually a digital evidence. And if the victim goes to the police and produce that evidence, then actually the other person is behind the bars. There is again the case proceeding is to be conduct on that particular regard. तो एविडेंसेस आज बहुत सारे हैं, मतलब वो कहते हैं ना, मैंने देखा है कुछ लोग जहां फ्रेंडली हो जाते हैं, 4 लोग या 4 स्टूडेंट खड़े हो जाएं तो बड़े इनफॉर्मल लैंग्वेजेस शुरू हो जाती है, अबे तू, and then sometimes then they start abusing to each another, where they feel it is a way, and they have a show off kind of, that they are a very carrying some power or some prestige or something like, and they want to present themselves like that. जब तक तो आप वर्बल हैं, that's okay, कोई रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है, आप बचे हुए हैं जी. जिस दिन वही कंसेप्ट आपने कोर्ट में और आपने कहीं ऑनलाइन भेज दिया, एक केस मुझे याद आ रहा है, आई विल शेयर अ केस विद यू. एक ग्रुप था, ये इनफैक्ट ये एक ग्रुप था, जैसे हम लोग व्हाट्सएप वगैरह पे ग्रुप बनाते हैं, आई थिंक 4 साल 5 साल पहले का एक ये केस है. एक ग्रुप था, वो था जी जीजा साला ग्रुप. So all jijas and salas were there in one group. So I think now you can see it is a very hot topic in the families, and the people are there over there, and I don't know वो क्यों ऐसे और क्यों बनाया गया, but almost many jijas and many salas were there on that group, and then morning, good morning and all respect, and in India na, once you are a jija, then you have an extra reputation and you are looking for extra hospitality kind of from your salas and other your in-laws. तो ये एक जो नेचर है वो थोड़ा सा कहीं गड़बड़ है इंडिया में. सो वेल द कंसर्न वाज, कहीं किसी एक जीजा साला में थोड़ा सा डिस्प्यूट चल रहा था, कॉन्वर्सेशन हो रही थी, कुछ कंटेंट डाला गया, शेयर किया गया, उस पे कमेंट्स आ रहे थे, सजेशन से ओपिनियंस थे, और सिंपल डिस्कशन चल रहा था. वन statement posted on a WhatsApp group in that same channel, almost I think 50 plus people were there. Can you imagine? In that group almost 50 plus people were there in small group, and वहां पे एक जीजा ने ये मैसेज डाल दिया, अरे साले तुम तो साले ही रहोगे. So that was a statement written by the person, and that statement was, अरे साले तुम तो साले ही रहोगे. And that statement, because it was posted on a WhatsApp group, would create a big panic for them. अब जो Mr. Sala जो थे हमारे, he was little legal background or knowing about the legal technicalities. Based on that chat conversation,
he sued his Jija in the court and asking for the compensation because he said he tried to defame. That is a case of defamation. He tried to defame him on in a society where more than 50 people were presented, and everybody have seen that message where he was trying to abuse me and he was trying to defame me. So again the contest are हमने defame कहाँ किया? So the way it was introduced, अरे साले. So he said like the first sala word was actually used because that word was introduced as my sister got married with this person, and obviously in that regard in Hindi I become his sala. So Hindi में हम इसी को इस तरीके से ही बोलते हैं. But अरे जो सेकेंड वर्ड अगेन इन्होंने यूज किया, द फर्स्ट वर्ड गिव्स अ मैसेज दैट आई एम इनटू द रिलेशन विद दिस पर्सन बिकॉज माय सिस्टर गॉट मैरिड विद दिस पर्सन. But the second word intentionally, forcefully, annoyedly, ill will, with the desperately to insult me, they mention this word in the statement कि अरे साले तुम तो साले ही रहोगे. So that साले ही रहोगे is a really defamation for me, and I want to sue him behind the bars, and I want a claim on that regard. Compensation मांगा गया था करीबन 5 करोड़ रुपया कि इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट पे उसने मुझे डिफेम किया. सो दैट इज अ केस ऑफ डिफेमेशन. हालांकि एक सिविल सूट था, लेकिन यस द सूट वाज देयर. तो आप समझ सकते हैं कि आप लोग जो वर्ड या जो कंटेंट ऑनलाइन पोस्ट करते हैं, सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं, बेसिकली योर लाइफ might become a hell in case if you are not thinking what you are doing and what activity being performed by your side and how to manage and how to control this kind of things. So please try and understand जो slangs, जो words हम लोग day to day life में use करते हैं, that should not be placed online while chatting. ये आजकल जो नए abbreviation words आ गए हैं, please try and understand. I don't know why we all are using, and there is nothing in the dictionary of English, but people are writing like lol, lol, FYI and TY, take care, and I don't know, like many short forms or abbreviations were started nowadays for the interaction. Please try and understand. Sometimes some words are different in, like हमने अगर means if you really compare mota bhai, so mota bhai, if you will say in Hindi, it means you are talking about the person who is quite fatty. And if you will say mota bhai in Gujarati, that means you're talking and you're giving a respect to your elders, right? So you know, the meaning of the same words are different in different languages, and we have the diversification in India. So we have to respect the language, religion, sex, and the content, and religious activity especially, or the slangs. So please try and understand, whenever you are writing any content online or posting any content online, should be decent, should be worthwhile, should be with some consent. Try to mention the content which is complete sentence, like object, verb, and subject, verb, object, right? So it has to be in a proper English sentence, rather than placing any content from haywire language, and we get into that particular parts. So the real challenges in the cyber rights or in the cyber citizenship and the legal terms, if we'll talk about, and other things if we'll talk about. So we are talking about the life, we are talking about the liberty, how much liberty we have in the cyber, for our cyber citizenship or netizen, as we are talking about, right? What is the pursuit of happiness? So where is our happiness? Actually, we have to we have to calculate this part, and on the basis of certain things. So this is what all about, and I think this is where we have to really work out in the terms whenever we talk about the cyber rights. So what are my rights? What are my
my rights, being a citizen like I have in India, we have our own rights. Then why not the rights related to our data privacy, the authenticity, the individual content? Where is my individual content? I think these all are the areas which are completely gray areas. And because we are actually in such a world, such a virtual world, where we are not aware what type of information being accessed by us, and that information was circulated from which IP address, from which country, from which particular location. So that creates a real problem for everybody. On this regard, again, I'll ask you one more thing. आप में से कौन से लोग हैं, और आई थिंक अब आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि मैं जो आपसे बात करना चाह रहा हूं. देखिए, साइबर और साइबर इश्यूज और साइबर लॉस पढ़ना है तो केस स्टडीज हैं हमारे पास, और हमारे पास आज सब कुछ है. 22 साल से हमारे पास साइबर लॉ है. बट चैलेंजेस क्या है? Why the things were not introduced in a proper way, in a proper manner? And I think that is the most important area where we have to talk about cyber citizenship. We have to talk about cyber rights and the privileges being granted to us. And whatever the privileges being granted to us, being a cyber citizen, being a cyber user, I am supposed to get that information. And that has to be given by the enforcement agencies or investigating agencies throughout the globe. I'm talking about throughout the globe. Matlab, I'll ask you one good question to all of you. How many of us really use VPN? कौन VPN use करता है जी? Yes, please. Sir, we use VPN for treasury related activities. Right. Government treasury. Right. Great. So any idea? Sir, क्या कर सकते हैं? Purpose क्या है VPN का? क्या होता है VPN? Sir, VPN is a virtual private network and secured line. And Okay. like the content that is transferred through the VPN cannot be shared with other channel partners. Okay. Good. Anything else? ये बात तो समझ में आई, लेकिन एक्चुअली पर्पस कहाँ है इसका VPN का? क्या हम इसे private network access over the public network. बहुत बढ़िया. That is the actual right definition, that we are using our private network on the public network and all. तो अगर मैं इसका एक कंसेप्ट लिखूं, ये देखिए प्रैक्टिकल जरा मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं. फिर से मैं गूगल पे जाता हूं, जो कि पता नहीं क्यों मुझे तो गूगल पे सारे इंफॉर्मेशन करेक्ट नहीं लगती. आई डोंट नो हाउ यू विल टेक केयर एंड व्हाई वी. मैं एक सिंपल सा एक लाइन लिखता हूं, टॉप 10 VPN. मैंने गूगल पे लिखा टॉप 10 VPN, और एडवर्टीजमेंट्स को अगर हम छोड़ भी दें तो जो पहला टॉप लिंक आ रहा है वो कुछ आपको लिस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर्स का नाम बता रहा है. ठीक है जी, ये टॉप 10 VPNs हैं अकॉर्डिंग टू गूगल. आप भी ट्राई कर सकते हैं अपने एंड पे. So this is the list of top 10 VPNs which are there, which are listed. My concern is, shall I use this VPN, the first top one? इससे होगा क्या? जो आप बातें कर रहे हैं, सिक्योर लाइन, जी बिल्कुल सिक्योर लाइन दे रहा है, वो क्लेम कर रहा है कि हम सिक्योर लाइन दे रहे हैं. VPN यूज करने से होगा क्या, और VPN यूज ना करने से क्या होगा? क्या डिफरेंस क्या है? ये VPN IP हाइड कर देते हैं सर कई बार जी. तो जी, इसको आइडेंटिफाई नहीं किया सकता हो, फिर अपन जो भी वेबसाइट एक्सेस कर रहे हैं उसका रिकॉर्ड फॉर्म नहीं होता. बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक कहा आपने सर. सो इसका मतलब अगर मैं इसको इस तरह से लूं, तो क्या आपको लगता नहीं गूगल में जहां VPNs को प्रमोट कर रहा है और गूगल भी हमें दिखा रहा है, और VPN सॉफ्टवेयर्स आर द सॉफ्टवेयर्स व्हिच आर ट्राइंग टू क्रिएट द एनोनिमिटी in our society, because they hide the IP addresses and they create the fake identity of the user, ताकि यानी हम क्या हैकिंग को बढ़ावा दे रहे हैं क्या VPN यूज करके? तो क्या मैं ये समझूं कि ये जो टॉप 10 VPNs आए हैं, ये जो टॉप 10 VPNs के लिस्ट आई है, ये सारे के सारे हैकर्स लोग खरीदते होंगे, इनमें से कोई भी जो उन्हें सस्ता लगता होगा या सही लगता होगा, ताकि वो अपना IP एड्रेस छुपा सके, एनोनिमिटी क्रिएट कर सके, ताकि उनकी आइडेंटिटी बाहर लीक ना हो,
और इस पर्पस के लिए वो लोग जाते हैं और ये वीपीएन्स खरीदते हैं और बस कुछ भी मिसयूज करते हैं, कुछ भी अटैक करते हैं। तो क्या वीपीएन इस पर्पस के लिए बना है क्या? Is that VPN is meant for this particular? ये देखिए, ये बता रहा है, ये मैंने एक्सप्रेस वीपीएन आपके सामने खोला, ये कह रहा है जी मैं तो 160 लोकेशंस का आईपी एड्रेस दे सकता हूँ, 94 कंट्रीज का दे सकता हूँ, अनलिमिटेड स्पीड दे सकता हूँ, आप मेरा पैकेज ले लें, एंड व्हाटएवर द पैकेज विच दे आर क्लेमिंग, सिक्योर्ड होगा। और इसके अगर आप फीचर्स और अगर हम ये सब पढ़ना शुरू करें तो आपको इसमें यही सब मिलेगा, पावर्ड ऑनलाइन प्रोटेक्शन मिलेगी, आपका कहीं डेटा, defeat hackers and spices with the best in class encryption and leak proof data, जो हम सिक्योरिटी की अभी बात कर रहे थे। इंटरनेट विदाउट बॉर्डर्स means obviously you can access the data without borders, means and supercharged VPN like connect and unlimited bandwidth, ultra fast VPN servers are there. So they are claiming like this. जो जो आप हमें बता रहे हैं वही चीजें तो इसमें भी हैं, लेकिन टेक्निकली सोसाइटी के हिसाब से सोचिए, लोग वीपीएन का यूज कहां कर रहे हैं? क्या है वीपीएन टेक्निकली? ये तो एक टेक्निकल टर्म्स है ना। एक्चुअली वीपीएन का मतलब क्या है? वो सिक्योरिटी देता है जी, वो इंटरनेट से आपको कनेक्ट कर देगा, फास्ट स्पीड देगा, सिक्योर चैनल होगा। तो मैं अगर इसका एक केस स्टडी लूं, इवन वन ऑफ माय फ्रेंड, वो नॉन टेक हैं, लेकिन आई डोंट नो, ही वांट टू इंटरेक्ट विद मी और समथिंग लाइक, so he called me up and he said, hi Anup ji, आपको पता है recently I purchased one VPN and now I am also worried about my all the financial transactions and other transaction, so I now started using a VPN, I paid and I got a purchase account. आप कौन सा यूज करते हैं? मैंने तो ये वाला लिया है। तो मैंने उनसे सिंपल एक चीज पूछी, एक बात बताइए, आपने VPN क्यों किया? आपके लिए VPN का क्या मतलब है? कहते हैं सिक्योर कम्युनिकेशन है, इंक्रिप्टेड है, सेफ्टी मिलेगी। अरे सेफ्टी किससे मिलेगी? कैसे काम करता है टेक्निकली बताइए, किससे सेफ्टी की बात कर रहे हो आप? So he said, I want to use my banking, I'm into share market, so I'll do my transactions on share marketing, I have my email IDs. मैंने कहा आपका इंटरनेट यूज क्या है? तो उन्होंने यही बताया, बैंकिंग करते हैं ऑनलाइन, अपने आईडीज एक्सेस करते हैं रेगुलर, कुछ शेयर मार्केट का तो ऑनलाइन कुछ एक्सेस कर लेते हैं, और बस यही 4-5 चीजें करते हैं ताकि वो सिक्योर रहे, मेरी इंफॉर्मेशन, मेरा बैंक अकाउंट, मेरा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कहीं लीक ना हो। सो means I have a different perspective, frankly speaking. According to me, VPN is actually being produced by the hackers to hack our society. VPNs, I never recommend VPNs. If you are a journal user, if you want to do your banking, if you want to do your mail access or your identities which you want to access, or you have some financial records or financial transactions, never ever use VPN. क्यों? क्योंकि इसको ना प्रोड्यूस इस तरह से किया गया, प्रेजेंट इस तरह से किया गया, इस वजह से हम लोग भी उसी तरह से उसी मॉडल में चलने शुरू हो गए। जो दिखाया गूगल ने, आंखें बंद करके गूगल की बात मान ली और गूगल के बेसिस पे हम चलना शुरू हो गए। मेरे हिसाब से ये सारे के सारे वीपीएन जो हैं, ये सब हैकर कम्युनिटीज ने बनाए। कोई भी ऐसा वीपीएन है जो इंडिया का हो? पहली चीज। सो ऑल टॉप 10, इफ यू विल सी द लिस्ट ऑफ टॉप 10s आर नॉट एट ऑल बिलोंग्स टू इंडिया। देयर इज नो रिकॉर्ड, देयर इज नो मैनेजमेंट इन इंडिया। Say top marks, and even you can see somewhere, मैंने कहीं ये भी पढ़ा, they'll not maintain the logs for your safety and say your privacy and unblocking. So privacy, इनके भाषा में privacy का मतलब ये है कि आपके logs और आपकी जो भी activities होंगी वो किसी के साथ share नहीं की जाएंगी। This is what they want to convey in the terms of privacy. But sorry to say, मुझे अगर अपना बैंक एक्सेस करना है, so don't you think so I have to go directly to my bank and access personally to that bank, and I'll get the, because it's a confidential transaction and I have to keep it in the records. Why unnecessary? You're going from India using VPN, so VPN will going to change your identity of some other country, as you have seen
तो आप इंडिया से अगर आपको अपना बैंक एक्सेस करना है, लेट्स से एसबीआई बैंक आपको एक्सेस करनी है वेबसाइट, तो आप अपना इंडिया का अपना आईपी एड्रेस, अपने आईएसपी का एड्रेस को हाइड करके आप यहां से पहले पाकिस्तान, पैलेस्टीन, यूएस, यूक्रेन, यूके और ना जाने कौन सी कंट्रीज के आईपीस का आप यूज करेंगे, तो आपकी रिक्वेस्ट पहले इस वीपीएन सर्वर पे जाएगी और फिर उस वीपीएन सर्वर से आपके एसबीआई बैंक पे आएगी। क्यों ऐसा करना चाहते हैं? टेक्निकली बताइए ना, वीपीएन का मतलब क्या है, क्यों हम वीपीएन यूज कर रहे हैं? So virtual private network is a special network where all your requests generated from your machine, from your ISP, आपके ISP से तो वही डेटा जा रहा है, आपके ISP से सारा डेटा आपकी आइडेंटिटी के साथ VPN सर्वर पे रिक्वेस्ट जा रही है। जब वो VPN सर्वर पे रिक्वेस्ट गई तो VPN सर्वर उस पैकेट को फिल्टर करेगा, पैकेट फिल्टर करने के बाद उसका HTTPS सर्टिफिकेट वहां पे ही डिप्लॉय होगा। एक और चीज आपको बता रहा हूं, यहां पे HTTPS हैकिंग की जा सकती है, वहीं पे पैकेट्स को ओवरलैप किया जाएगा क्योंकि अब वो पैकेट उस VPN सर्वर के नेटवर्क का पार्ट बन गए। वहां पे नेटिंग या मैस्करेडिंग नाम की टेक्नोलॉजी जो हम लोग यूज करते हैं, वहां पे आईपी पैकेट का सोर्स आईपी एड्रेस ओवरलैप होता है। जब पैकेट का हेडर का सोर्स आईपी एड्रेस ओवरलैप होगा, ओवरलैप होने के बाद वीपीएन सर्वर का आईपी यूज होगा जो कि किसी भी कंट्री का है, से पैलेस्टीन या यूक्रेन या पाकिस्तान या बांग्लादेश या हार्डली मैटर्स, ठीक है। आप किसी कंट्री का आईपी यूज करते हैं और वहां से आप कहते हैं मैं एसबीआई ऑनलाइन बैंक अपना एक्सेस कर लूं, सो वो जो रिक्वेस्ट एसबीआई बैंक के पास आएगी और एसबीआई में अगर मैं ट्रांजैक्शन या रिवर्स इंजीनियरिंग या इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जाऊंगा तो मुझे आईपी किसका मिलेगा? वो किसी और कंट्री का मिलेगा ना। लेकिन अकाउंट कौन सा एक्सेस हो रहा है, यूजर नेम पासवर्ड कौन सा डाल रहा है, वो आप खुद डाल रहे हो। सो प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, this is the biggest mistakes being done by all Indian citizens, all cyber citizens. Like, these are the real challenges that why we are using VPN, we are not aware of it. And हम तो VPN को ये लेके चल रहे हैं कि भैया ये तो सबसे खतरनाक चीज है और आपका आईपी बदल जाएगा। If you are in hacking, go ahead. I agree with that. You are doing some security analysis, you are into investigation, आप अपनी आइडेंटिटी को छुपा के रखना चाहते हैं, okay, go ahead, use the VPN. टॉप 10 VPNs हैं, गूगल में से जाइए, जो पसंद आए वो परचेज कर लीजिए। बट क्या VPN इस पर्पस के लिए बना है? जी नहीं। Just try and understand. Now I'll give you the real definition of VPN. I'll give you the real purpose of VPN. Virtual private network, whenever we are talking about the virtually, we want to access my private network. That means at the time of COVID-19, अब आप समझिए ध्यान से, जहां लॉकडाउन शुरू हुआ, there was a huge demand of VPN. Huge demand of VPN में लोग इस VPN पे, गूगल के VPN पे चले गए और कितनों के अकाउंट हैक हुए, more than I think मतलब जो साइबर क्राइम का रेशो था, that increased up to 400% because the people were using VPN. And the best part, उनमें से कोई भी केस सॉल्व नहीं हो पाया जनरली जब तक वो हाई प्रोफाइल केस नहीं था। उसका रीजन क्या है कि आप लोग सब VPNs यूज करके हैकर्स अटैक कर रहे हैं। So the purpose, like what is like how the hackers are using, they're misusing the technology, but technology never being generated to hack someone. Technology means something else. तो टेक्नोलॉजी VPN का मतलब क्या है वो समझिए ध्यान से, और रियल इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स क्या है वो समझना बहुत जरूरी है। So the practical example of this VPN is, let's say I'll give you a small example. I have an organization. Now due to COVID-19, अभी पहले क्या हो रहा था, मेरे सारे एम्प्लॉयज मेरी कंपनी में आते थे, बैठते थे, इंटरनली मेरे बिजनेस एप्लीकेशन से सैप हो गया, ERP हमारे पैकेट्स हो गए, एप्लीकेशन सर्वर्स हो गए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। लेट्स से मेरे ऑफिस में एक लैन है और लैन में एक लैन प्रिंटर लगा है जो कि हम लोग अपने सिस्टम पे बैठे हैं। बड़ा सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं मैं। हम लैन में हैं, प्राइवेट नेटवर्क चल रहा है, उसमें एक कुछ रिसोर्सेज हैं, वो बिजनेस सर्वर हो सकते हैं, वो हमारे इंट्रानेट वेबसाइट हो सकती है, वो
कोई बिजनेस एप्लीकेशन हो सकती है जहां पे हमें वैल्यूज को पंच करना है, करवाना है, ठीक है। कॉन्फिडेंशियल डेटा है तो कंपनीज को, जैसे पहले एम्प्लॉयज में क्या होता था, एम्प्लॉयज कंपनी में जाते थे, अपना फोन अपने लॉकर में सीज करते थे, कोई पेनड्राइव वगैरह अलाउड नहीं होती थी। दे गेट इनटू द सिस्टम, अपना यूजर नेम पासवर्ड लॉग इन करके वो अपने पोर्टल में एंटर करते थे और वहां पे अपना जो भी उनका वर्क प्रोफाइल था, they'll start working on that. They were not supposed to capture any information. They were not supposed to carry any information in the digital form from the system because that is a confidential information and we have to maintain that confidentiality on that data. इसी तरह से लेट्स से एक मैं सिंपल सा कंसेप्ट ले रहा हूं, एक हार्डवेयर, एक लैन प्रिंटर, मेरा नेटवर्क प्रिंटर लगा है, मैं ऑफिस के लैब में, ऑफिस में हमारा जो कंप्यूटर है उसमें मैं एमएस वर्ड पे काम कर रहा हूं, वहां से मैंने कंट्रोल पी का प्रिंट का कमांड दिया जहां पे ड्राइवर ऑलरेडी इंस्टॉल था। तो जब मैंने प्रिंट किया तो मेरे पास एक लैन प्रिंटर है, तो मेरा प्रिंट आउट लैन से उस प्रिंटर पे निकलता है। सो दिस इज अ लैन सर्विसेज। नाउ आई वांट द सेम सर्विस फ्रॉम इंटरनेट, फ्रॉम व्हाइल वर्क फ्रॉम होम। तो जब मैं घर पर हूं, अब मैं घर पर हूं और मुझे ऑफिस के प्रिंटर के को प्रिंट निकालना है, मुझे ऑफिस में जो कुछ सर्वर्स लगे हुए हैं उनको एक्सेस करना है। हाउ कैन आई डू दिस? सो इट इज नॉट ऑन इंटरनेट, इट इज नॉट अ डोमेन, पब्लिक डोमेन, it is internal network, private network, internal network resources or some services which were running. So actually I need to deploy VPN. So this is the real purpose of VPN. I need to deploy VPN at this stage. Virtual private network मुझे यहां पे इंस्टॉल करना है। तो जितने आईटी हेड्स थे, जहां ये कोविड-19 आया, लॉकडाउन लगना शुरू हुआ, लॉकडाउन लगने से सभी इंप्लॉयज घर बैठे थे। अब घर बैठ के उन्हें ऑफिस का काम करवाना है, तो ऑफिस का काम अगर घर बैठ के करवाना है तो व्हाट दे नीड टू डू, दे यूज देयर हार्डवेयर्स, दे यूज VPN सर्वर्स। तो एक्चुअली आपको क्या बनाना था, you have to go and run, they basically started open VPN servers, दिखे on Ubuntu and all. They started making their own servers at their end in the company. तो हमने कुछ सर्वर्स बनवाए कंपनी के अंदर, VPN सर्वर्स बनवाए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, या कुछ अच्छे हार्डवेयर हैं जो फायरवॉल्स और राउटर्स आते हैं उसके अंदर VPN सर्विसेज भी आती हैं, तो हमने वो कॉन्फ़िगर करवाई या तो हार्डवेयर लेवल पे, और अगर हार्डवेयर सपोर्ट नहीं कर रहा तो सर्वर लेवल पे विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। वी रिक्वेस्टेड टू गेट वन पब्लिक स्टैटिक IP इन द ऑर्गेनाइजेशन, और उस पब्लिक स्टैटिक IP एड्रेस को हम VPN सर्वर के साथ जोड़ देते हैं, जिससे क्लाइंट अपने एंड पे बैठ के वो VPN कनेक्ट करता है, उसमें उसके कंप्यूटर पे एक वर्चुअल लैन कार्ड भी जनरेट होता है। फॉर मोर डिटेल्स यू कैन एक्सेस ifconfig और अदर नेटवर्क सर्विसेज या ipconfig/all से आप अपना चेक कर सकते हो ifconfig। सो आप ifconfig करेंगे, जैसे ये लैन कार्ड आ रहे हैं, आपको यहाँ पे एक वर्चुअल लैन कार्ड भी दिखाई देगा। So you will get a one virtual LAN card and there you need to go for authenticity. वहां आप अपना credibility पंच करेंगे, अपना employees जो उसमें access के rights रखते हैं, privilege, whatever the privilege being granted by the admin. So you need to go, log in, pass your username and password. So once you are already on internet, from internet, your request goes to your office network. Once the request reach to the office network, office VPN server identify your credentials, and based on that credential they will allow you to access internal network services। यानी कि अब मैं जब मैं VPN से कनेक्ट हो जाऊंगा तो मेरे को ऑफिस का प्राइवेट IP एड्रेस मिलेगा मेरे वर्चुअल LAN कार्ड पे। Technically I will going to get a one private IP address of my LAN, and once I'll get the IP address of my LAN on a virtual card, तो मैं अपने आप उस LAN का मेंबर बन गया, लोकल एरिया नेटवर्क का मेंबर बन गया via internet, via connected to the internet. And on that basis, then I can again use my MS Word, again use the same computer, again I can give a control P command and take a printout.
वो प्रिंट रिक्वेस्ट मेरे इंटरनेट से होती हुई वीपीएन सर्वर पे, वीपीएन से लोकल लैन में प्रिंटर ऑन है तो प्रिंट निकालेगा। ये रियल पर्पस है जी वीपीएन का। दैट मीन्स वी आर एक्सेसिंग इंटरनेट, मीन्स वी आर एक्सेसिंग प्राइवेट नेटवर्क ऑन इंटरनेट। बट यहीं पे अगर मैं थोड़ी सी सर्विस चेंज कर दूं, मैंने अपना वीपीएन सर्वर बनाया, जैसे मैंने आपको दिखाया अभी, लाइक गूगल पे, अगर आप अपना एक वीपीएन सर्वर इसमें कॉन्फ़िगर करते हैं, ये आप जाएं तो जैसे यूबुंटू और कोई भी लिनक्स सर्वर लेके आप अपना वीपीएन सर्वर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसमें केवल हमें ये सेटिंग करनी है कि वो केवल लैन इंटरनेट हमारा लोकल नेटवर्क को एक्सेस करेगा या मेरा पब्लिक नेटवर्क को भी एक्सेस कर लेगा। यानी कि अगर पब्लिक नेटवर्क को एक्सेस कर लिया तो वो लगभग ऐसा सर्वर बन गया, यानी कि इंटरनेट से ही रिक्वेस्ट आएगी और इंटरनेट पे ही रिक्वेस्ट चली जाएगी। मेरे को अपना प्राइवेट नेटवर्क एक्सेस ही नहीं करवाना है। लेकिन पर्पस क्या है? एनोनिमिटी। पर्पस क्या है? हैकिंग। तो ये छोटा सा ट्यूनिंग है जो वीपीएन में था और वीपीएन सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट है। तो आज आप चाहें तो अपना वीपीएन सर्वर बनाइए, कॉन्फ़िगर कीजिए और आप भी चाहे तो ऐसे थर्ड पार्टी सर्विसेज प्रोवाइड कर दीजिए, या क्यों नहीं हम क्लाउड सर्विसेज ले लें। क्लाउड एप्लीकेशन सर्वर्स में तो आपको जितने चाहिए, जो क्लाउड सर्वर के पास है आप उतने लोकेशन, उतनी कंट्रीज आज ही दे देंगे उनको। So basically you want IP address, you want the identity of that IP address which are connected with your VPN servers, and even you can start the business like this. But what is the intention? What is the purpose of such applications? The real purpose of VPN is little different, and the actually being promoted on Google is something else. जो आप सिक्योर चैनल, सिक्योर टनल की बात कर रहे हैं, वो आप अपने डेटा को ट्रैवल करवाना है, सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों रिलायबल होंगे। लेकिन जो चैनल आप यूज कर रहे हैं, ये थर्ड पार्टी वीपीएन यूज कर रहे हैं, ये क्या गारंटी है कि ये आपका डेटा हैक नहीं कर रहे हैं? आपका HTTPS सर्टिफिकेट, एंड टू एंड इंक्रिप्शन की बात करते हैं हम लोग, एंड टू एंड इंक्रिप्शन। व्हाट्सएप आप यूज कर रहे हैं, तो अगर आप एंड टू एंड इंक्रिप्शन कर रहे हैं, अ यूजर हु जनरेटेड, हु कंपोज अ मैसेज फॉर यू and that message to be delivered to the destination only, and then only they can access, and in the entire middle way no one should able to access the data. But if you use the VPN, then what happen? Then your HTTPS certificate need to be deployed on the concerned, ये देखिए ना बड़ा सामने आ गया, ये लीजिए, एक्सप्रेस VPN है और इशू किसने किया? Amazon ने इशू किया इसका सर्टिफिकेट इस वेबसाइट के लिए। सब थर्ड पार्टी, यानी ये कहीं ना कहीं सर्विसेज भी Amazon से लेके बैठा होगा। AWS बैकएंड में अगर हम कनेक्ट करके चेक करें तो शायद AWS के सर्वर्स हों, राइट? So please try and understand the technology, how it is working, and what is the real scenario in our society, and what we are getting it from the society, and what we are delivering back to the society. This is the responsibility of all the professors, all the faculties, and all the top technical people, tech savvy people, to please elaborate and clearly mention what you want to do. I never recommend all these VPNs. Why to use these VPNs? Why my data, my banking data, my personal data goes via these channels where you have a IP address of some other countries, and in case of any dispute, in case of any cyber crime, still now we don't have a good foolproof information which comes from other countries. Due to that, the lack of there is a dead end, and due to the lack of resources and lack of communication channel with the other countries, we are still facing the problem, and we are still looking for the cyber rights. तो एक्चुअली हमें ये चाहिए, ये एक लॉ चाहिए हर एक साइबर सिटीजनशिप के लिए। जब हम क्लेम कर रहे हैं, हम किसी साइबर वर्ल्ड में कनेक्ट होते हैं, तो आई वांट द लिबर्टी टू एक्सेस माय डिटेल्स, that the packet which I received should be received from which particular internet services, and उसके पीछे कोई और अगर IP है तो at least I should get the complete channel. Let it be on the legal side, at least not from the endpoint side, but at least should be on the legal side, so that at least
legal entities can able to resolve the cases, can able to retrieve the information on your request. So which is missing. So that level of privileges which are still missing, and we all are depending upon whatever being produced by the Google and presented on the Google, and will say this is best and will opt out of it. So ये VPN और actual VPN की कहानी आपको समझ में आया होगा, दोनों different हैं. They are not the same one. They are not actually the concern like whatever we are doing it right away, right now in our society. So just try and understand what is this all about, and how the issues being generated and what type of challenges are coming in our society. And being a technical guy, हमें ही नहीं पता हम जिस बात पे जो हम बात कर रहे हैं, हम आधी अधूरी या कोई पर्टिकुलर पॉइंट बता रहे हैं. At least we need a complete scenario. And अगर यही चीज हम practically भी implement कर सकें, so would be great. आप मतलब अपने ऑफिस में, अपने कॉलेज में, अपने स्टूडेंट्स के लिए हम लोग ये थर्ड पार्टी ये अब लेना शुरू हो गए हैं. why we are purchasing all these things, and why we are paying a huge amount to these all third party service provider. आप चाहें तो अपने खुद का अपना ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सर्वर्स आप जिटसी, ये देखिए जे है, राइट. सो इट्स जिटसी. ये जिटसी मीट, ये यूबुंटू पे आप अपना खुद का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सर्वर बना सकते हैं. कैसे बनाना है, या क्लाउड में अपना बना सकते हैं. कैसे बनाना है, ये इसके परमिशंस, उसके ग्रांट, इसके सारे तरीके दिए गए हैं जी. सिंपल स्टेप्स है. आप अपना खुद का ये माइक्रोसॉफ्ट मीट, गूगल मीट और ये जो हम थर्ड पार्टी यूज कर रहे हैं, ये सिंपल प्रोसीजर आप अपना खुद का सर्वर लॉन्च कर सकते हैं. और अपने जो भी आपको प्रोटोकॉल्स में आपको कौन से प्रोटोकॉल के पैकेट्स और पोर्ट नंबर्स ओपन करने हैं, आप अपना खुद का वीडियो कॉन्फ्रेंस सर्वर ऑन कीजिए और स्टूडेंट्स को दीजिए. इनफैक्ट आई वुड से आप उन्हें गाइड कीजिए. यू आर ऑन अ फैकल्टी साइड. लेट देम कम अप एंड at least try to see the real challenges, the real technical challenges on the behalf of like the different type of technology which we are using, so that they will get a real hands-on. And I think that is the motive of these kind of trainings. Digital safety care. What do you mean by well-beings? So I think this word is very, very important as being selected by the authorities. ये well-beings word जो है cyber के साथ बड़ा diplomatic word है sir. और साइबर टेक्नोलॉजीज के साथ इसको कैसे यूज करना है, आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज. एंड ऑन दैट रिगार्ड, that's what I had given you the concept of cyber law, cyber citizenship, and few case studies which I tried to discuss with you all, especially at the time like we are talking about like on the case of VPN, कि गूगल जो दिखा रहा है सब सही नहीं है. बैकएंड क्या है, पर्पस क्या है, रीजन क्या है, क्या हमें चाहिए, what is our demand. Let us see what is our demand and why we are using that technology, and what are the consequences in case if any dispute is there, and how to resolve that issues and how to resolve that particular area. I think that is the biggest challenge. So I think इस पे हम थोड़ा सा वर्कआउट करें तो you will get a lot of information, and I think would help you to get into this particular part, and would be really, I think, appreciated to all of you. So I think I'm through with this session, and in case if you have any query, please feel free to ask. I think Mr. Ramesh Kumar ji hai. I think he want to ask some query. Sir, please you can unmute if you can, and I'm ready to give you some. I'll take some questions. सर मैं आज के सिनेरियो में जो अपन VPN यूज करते हैं सर, बेसिकली वो IP स्पूफिंग है जी. तो ये साइबर क्राइम में वायलेंस ऑफ साइबर सिक्योरिटी है, तो ये साइबर क्राइम है या नहीं है? बिल्कुल है सर. देखिए ना, आप ये चीज समझिए, साइबर क्राइम को हम इसको किस तरह से लेंगे. देखिए आजकल लॉ में क्या है, हम इंडिया में हैं और हमारे यहाँ ना एक और प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत है. तो इस चीज को ना आप सीधा साइबर क्राइम में ले नहीं सकेंगे. क्यों? जब तक कहीं कोई इंसिडेंट ना हुआ हो. अब इंसिडेंट सारे हो ही VPN से रहे हैं, ये भी सब लॉ एनफोर्समेंट जानते हैं, है ना. जब तक किसी का नुकसान नहीं हुआ और जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला IP एड्रेस किसी और कंट्री का है,
तो सबको पता चल जाता है अरे आईपी एड्रेस किसी और कंट्री का है, मतलब वीपीएन यूज हुआ है। तो हम लोग वीपीएन को इस तरीके से प्रोड्यूस कर रहे हैं और प्रेजेंट कर रहे हैं। एक्चुअली टेक्नोलॉजी थोड़ी गलत है जो हम उस पे कोई क्लेम करें या हम इस टेक्नोलॉजी को ही बार्ड कर दे या बंद कर दे या कुछ ऐसा करें। तो और आज इंटरनेट का मतलब क्या है, हम वर्ल्ड वाइड कनेक्ट हो सकते हैं। So the basic rights of the internet is I want to connect you. If you are in any other country, so it's my right to connect with you. तो अगर वो मेरा राइट है, मैं आपसे कनेक्ट हो सकता हूं, और आपका आईपी एड्रेस अगर किसी और कंट्री का है और आप वहां पे रिसाइड कर रहे हैं, तो मैं आपसे कनेक्ट होना चाहता हूं, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हमें कोई आईएसपी रोकेगा या लॉ रोकेगा या गवर्नमेंट रोकेगी, नहीं। लेकिन क्राइम जैसे हो रहा है, वीपीएन का कंसेप्ट आ गया, तो वीपीएन तो कनेक्टिविटी है, कहीं से भी हो सकता है। ऐसे तो क्लाउड कंप्यूटिंग बंद हो जाए, ऐसे तो सब कुछ बंद हो जाएगा। सो एंड द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज ये इतने एम्फसाइज कर देते हैं इस लेवल को लेके, क्योंकि इसके पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं, प्रोस एंड कॉन्स तो हर टेक्नोलॉजी के हैं। हाँ, जब तक इंडिया में कोई केस रजिस्टर नहीं होता ड्यू टू दैट पर्टिकुलर इशू और ड्यू टू दैट पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी और ड्यू टू एनी पर्टिकुलर आईपी एड्रेस, तो हम लोग यहाँ पे ना आईपी को बार्ड करने की बात कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं। हम एक पर्टिकुलर सर्विस या एक पर्टिकुलर एरिया और एक पर्टिकुलर नेटवर्क को ब्लॉक करवाने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। वो भी तब जब हमारे पास फुल प्रूफ एविडेंस होगा कि वहां से अटैक हो रहा है, तो तब तो हम ये चीज कर सकते हैं, जैसे डॉस अटैक, डीडॉस अटैक्स, और जो भी हमारे साइबर लॉ में जो हैकिंग से रिलेटेड जो सेक्शन मैंने आपको 43 बोला, 43 में ना 10 क्लॉजेस हैं, सब क्लॉजेस हैं, ए से लेके जे तक, आप रीड कीजिएगा। तो उसमें से कहीं पे भी कोई चीज मैच हो रही है तो हम उसके ऊपर कंसिडर कर सकते हैं, उसके ऊपर हम केस रजिस्टर कर सकते हैं, कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आप अपनी कंट्री में अपने लिए आप उस पर्टिकुलर को डेटा को फिल्टर कर सकते हैं, आप आईपी ब्लॉक कर सकते हैं, लेकिन हम पूरे वर्ल्ड को ये रिक्वेस्ट नहीं कर सकते या उस कंट्री को ये रिक्वेस्ट नहीं कर सकते कि आप उनका आईपी बंद कीजिए, क्योंकि वो आउट ऑफ ज्यूरिडिक्शन है। हमारी ज्यूरिडिक्शन वहां पे काम ही नहीं करेगी। हम कैसे उनको फोर्सफुली कह सकते हैं कि उनका आईपी एड्रेस बंद किया जाए? तो प्रॉब्लम इसीलिए आज सब जगह है कि हैकर्स तो खुल के काम कर रहे हैं, वो दूसरी कंट्रीज का आईपी एड्रेसेस यूज कर रहे हैं, वो हमारा आईपी यूज कर रहे हैं और हम उनका आईपी यूज कर रहे हैं। तो इंडिया और ये जो वर्ल्ड वाइड जो क्राइम हो रहा है, ये डार्क वेब, और आप समझ पा रहे हैं अगर आप देखें तो ये डार्क वेब्स और जितने भी साइबर रियल साइबर क्राइम है, जो साइबर टेररिज्म का कंसेप्ट है, वो आई थिंक मेजरली इंडिया ही नहीं सभी कंट्रीज फेस कर रही है, लेकिन चैनलाइज नहीं कर पा रही हैं, सिंक्रोनाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं। आई थिंक कुछ अभी इंडिया हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक डॉक्यूमेंट भी साइन किया, एक ट्रीटी साइन हुई है करीबन मेरे को लगता है शायद 25-26 कंट्रीज के बीच में, जहां पे इस क्लॉज को रखा गया है क्या यदि हमें आपकी कंट्री से कोई साइबर से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन या आईपी डिटेल्स चाहिए तो आप हमें उसके आगे से वो इंफॉर्मेशन निकाल के देंगे। तो अगर इंडिया से रिलेटेड होगी इंडिया देगा और दूसरी कंट्री से रिलेटेड होगी तो वो देगा। तो ये ट्रीटी साइन होनी शुरू हो गई है। दैट इज आल्सो बीन कंसिडर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। बट फिर वही बात है, वो प्रायोरिटाइज केसेस वो को ज्यादा बेसिकली, और एंड यूजर केसेस कहाँ जाएंगे और कहाँ कितना वो होगा। सो दैट्स अ बिग चैलेंज, इट्स अ स्टिल बिग चैलेंज। एक एविडेंस एक्ट का 65B आपने जैसे बात किया था, जी जी, जो सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करेगा डिवाइस ओनर, राइट, वो सेक्शन 65B सब सेक्शन 4 में है शायद, मैं ये कंफर्म नहीं हूँ, तो आप क्लियर नहीं, आप सिंपल इंडियन एविडेंस एक्ट देखिए सर, इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 65B का सर्टिफिकेट लगाना मैंडेटरी है, और वो तब है जब आप सेकेंडरी एविडेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर आपके पास हाँ, अगर आपके पास प्राइमरी एविडेंस है तो उसके लिए सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। प्राइमरी एविडेंस अगर आप डीवीआर ही दे देंगे, अपना मोबाइल ही दे देंगे जिसमें डेटा है, और वो प्राइमरी एविडेंस है, और उसको सीजर मेमो में और उसको प्रॉपर चैनलाइज तरीके से उसको सबमिट कर देंगे, तो फिर आपको सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। ठीक है जी। चेन ऑफ कस्टडी में जैसे लेते हैं, चेन ऑफ कस्टडी जब सीजर का फॉर्म यूज करते हैं तब वो सेक्शन जो है वो 65B सब सेक्शन 4 है। ठीक ये है, कंफर्म करना चाहता
ये तो एक बार आपको नहीं, जनरली हम सब सेक्शन 4 में लेते नहीं, सीधा 65B बोलते हैं। एक मिनट, ओके सर, ओके। आप एक बार चेक कर लीजिए, मेरे हिसाब से उसमें है नहीं ऐसा सब सेक्शन इसका 65B का। आप सब सेक्शंस की बात कर रहे हैं ना? जनरली हाँ, एक सर्टिफिकेट है। हाँ, ये ना एक सर्टिफिकेट फॉर्मेट है इसका जो आपको मिलेगा। अगर आप जो हाँ, बी का 4 वाली बात करें, एविडेंस एक्ट की, है ना जी? मैं समझ गया, राइट, 65B का 4 सेक्शन में है जो आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। राइट। जी जी जी, ओके, राइट राइट, थैंक यू। जी, मोस्ट वेलकम सर। So, Puneet ji, if you want to ask something, your hand was Yeah. raised, Mr. Puneet Malhotra. नमस्ते सर। जी Yes, sir. सर मैं पूछना चाह रहा था, जैसे आपने बताया कि हम खुद का एक वीपीएन है ना सर्वर बना सकते हैं, तो सर इसमें जो ओपन वीपीएन सर्वर है, क्या वो डी डॉस अटैक या डी डॉस अटैक से फुल प्रूफ है, या फिर कुछ और भी हमें इसमें एक्स्ट्रा कोई भी एल्गोरिदम या कुछ एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर इसमें इंस्टॉल करना पड़ेगा ताकि वो डी डॉस अटैक या डॉस अटैक से थोड़ा सा बचाया जा सके? बिल्कुल करना पड़ेगा सर एक्स्ट्रा। वीपीएन सर्वर डॉस डीडॉस अटैक प्रोटेक्शन नहीं है। वीपीएन सर्वर इंटरनेट सर्विसेज पे अगर आपकी ऑथेंटिसिटी क्रिएट हो जाती है, टेक्निकली ये कहता है कि अगर आपने अपना जो यूजर नेम पासवर्ड या जो क्रेडेंशियल डाला है वो वैलिडेट करता है बैकएंड में वीपीएन, और अगर वो हो जाता है तो आपका प्राइवेट नेटवर्क का जो भी नेटवर्क इंटरफेस का आईपी एड्रेस है वो वर्चुअली आपकी मशीन को अलॉट करता है, जिसमें डॉस डीडॉस का कहीं कोई मेंशन नहीं है। तो डॉस डीडॉस को मिटिगेट करने के लिए आपको अपनी फायरवॉल पॉलिसीज लिखनी है, वो आपको अपने राउटर में अलग से मेंशन करके चलना है। ओके, ठीक है जी, राइट, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। Thank you so much, sir. So Last call for the participant if they have any query. Otherwise, I will call upon the Sanjay Sharma sir to have few words about the session. Sanjay Sharma sir, please. Am I audible, Mr. Prashant? sir, yes sir. Thank you, Dr. Anup, for such an informative and interesting session. आज संडे है, हालांकि सब अपने अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, पर ये जो सेशन रहा बहुत ही शानदार रहा, और पूरे 1.5 घंटे के जो सफर में आपने हम सबको बांधे रखा वो काबिले तारीफ है सर। तो ये जो 1.5 घंटे का जो सफर है हमारे लिए सबके लिए बहुत यादगार है। इसको मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ, कहाँ से हमने शुरुआत करी और कहाँ खत्म किया। तो सबसे पहले डॉक्टर अनूप ने हमें बताया कि इंटरनेट जो भारत में सबसे पहले 1994 में आया था, उसके बाद कुछ साइबर लॉ बना 2000 में, तो अलग अलग नोटिफिकेशन और रेगुलेशन इसके बारे में समय समय पर जारी होते रहे। इसी संबंध में इंडियन एविडेंस एक्ट के बारे में इन्होंने बहुत विस्तार से हमें बताया, डिजिटल एविडेंसेस के बारे में बताया कि हम कैसे डिजिटल एविडेंस को सही तरीके से प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसमें सेक्शन 354D जो कि साइबर स्टॉकिंग से संबंधित है, हमारे जो मतलब महिलाओं के सुरक्षा से संबंधित है, उसके बारे में बताया। इसके अलावा एक cybercrime.gov.in वेबसाइट भी बताई कि जहां भी हम लोग अपना कोई साइबर क्राइम होता है या कोई फाइनेंशियल फ्रॉड्स होते हैं उनके बारे में हम अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके बाद एक साइबर सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट बताया, उसके बारे में इन्होंने डिटेल डिस्कशन किया। इसके बाद जैसे जीमेल की बात करी कि हम उसके ओनरशिप रखते हैं कि नहीं रखते, अगर उसको हम लोग किसी कारण से भी वो कॉम्प्रोमाइज होता है तो क्या किसका नुकसान होगा, उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, और कैसे आप ये प्रूव करोगे कि भाई जो वास्तव में जो गड़बड़ हुई है उसको हमें हर्जाना अगर प्राप्त करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। कुल मिला के ये था कि जो एविडेंसेस हैं हमारे पास, डिजिटल एविडेंस, उनकी ऑथेंटिसिटी के बारे में बहुत विस्तृत जानकारी दी। उसमें एक सेक्शन 43 के बारे में सर ने बताया था, और उसमें हम लोग कंपनसेशन जैसा सर ने बताया था लगभग 1 करोड़ रुपए तक का भी हम लोग कर सकते हैं, और स्पेशल केसेस में अगर कमिश्नर को अपॉइंट करके जो कि IAS अधिकारी हो सकता है वो 5 करोड़ तक जा सकता है। उसके बारे में साइबर फॉरेंसिक्स के बारे में सर ने बहुत कुछ बताया। सेक्शन 65B जो इंडियन एविडेंस एक्ट है इसके बारे में भी बहुत कुछ बताया। आखिर में जो एक VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के बारे में जो सर ने जानकारी दी वो वास्तव में बहुत फ्रूटफुल थी, और कैसे हम लोग मतलब ये कहना ये चाह रहे हैं कि इसमें कि भाई हम लोग अपनी जो जानकारी है कॉन्फिडेंशियल वो हम किसी दूसरे को क्यों दें,
तो उसमें बहुत बड़ा रिस्क रहता है। और सर ने बताया था कि कोविड में बहुत ज़्यादा इस तरह के केसेस भी हुए थे और वो ज़्यादातर केसेस अभी भी अनसॉल्व्ड ही हैं। और फिर सर ने इसका तरीका भी बताया कि आप खुद अपने खुद के सर्वर्स सेट करके ना केवल अपने मतलब विद्यार्थियों को आगे बढ़ा सकते हो, पर उसमें मतलब एक अपना इंडिजिनियस अगर अपन काम करेंगे तो वो ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर रहेगा। थैंक यू सर। और इतना इंटरेस्टिंग जो सेशन रहा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद पूरी ऑर्गेनाइजिंग टीम की तरफ से। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू संजय सर। मैं अनूप सर को बताना चाहूंगा कि संजय सर है वो मैकेनिकल डिपार्टमेंट से हैं, कंप्यूटर से भी नहीं है, बहुत कम यूज करते हैं, लेकिन फिर भी उनको भी ये सेशन है बहुत अच्छा लगा है और उन्हीं ने इसका इसलिए कंक्लूड सर ने किया है स्पेसिफिकली मैकेनिकल का गाई है वो कैसे समझता है टेक्नोलॉजी। तो ये भी एक तरफ से हमारी तरफ से एक एक्सपेरिमेंट है। अब इलेक्ट्रॉनिक्स के हमारे रोशन जैन जी हैं, वो भी उनसे मैं कहूंगा बड़ी ब्रीफली आप बताएं क्योंकि टाइम है बहुत जा रहा है, अगला सेशन का भी टाइम हो गया है, सर का भी हमने बहुत समय ले लिया है, तो बड़ी ब्रीफली आप क्या कि संक्षिप्त में अपनी बात कहें। रोशन जैन जी प्लीज। थैंक यू सर। सर जीपीसी बाड़मेर की तरफ से अनूप गिरधर सर का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। सर आज का सेशन मैंने आपका पूरा अटेंड किया। सेशन को सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि जैसे 1.5 घंटे में आपने जितनी चीजों को सीसीटीवी और वीपीएन से रिलेटेड चीजों को जितनी विस्तार से आपने बताया, लग रहा है कि 1.5 घंटा कब बीत गया पता ही नहीं चला। और आपने जितनी बोल्डनेस के साथ में ये कहा कि गूगल जो भी बता रहा है उस पर आंख मूंद के विश्वास नहीं करना चाहिए, वो यदि टॉप 10 वीपीएन सर्वर सजेस्ट कर रहा है तो ऐसा नहीं कि गूगल जो बता रहा सब सही है। जितनी निष्पक्षता, स्वतंत्रता और बोल्डनेस के साथ में आपने अपनी जो बात रखी, मैं व्यक्तिगत रूप से आपके इस प्रेजेंटेशन के लिए मतलब खुश हूं कि आपने हम शिक्षकों को इसके लिए प्रेरित किया कि हर चीज को बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए। जो भी हम वीपीएन वगैरह यूज करें, सर्विसेज यूज करें, उसमें हमें ये समझने की जरूरत है कि हमारी क्या एक्चुअली रिक्वायरमेंट है, क्या उसकी क्या कहते हैं बैकएंड पे रिक्वायरमेंट है, क्या वो पब्लिक नेटवर्क पर कितने रूट होते हुए जा रहा है या नहीं चल रहा है, इन सब चीजों को देखना चाहिए। और आपने एक और अच्छी बात बताई कि आईटी पर्सनल्स है तो उनको ऐसे नहीं है कि कुछ हो गया बस ठीक है हार्ड डिस्क से फटाफट डेटा वगैरह लेना, तो उन सब है धैर्य से और सोच विचार के क्या कहते हैं करना चाहिए। ये भी है आपने आईटी और कंप्यूटर पर्सनल्स के लिए जो मैसेज दिया है ये रियली काबिल तारीफ है। मैं आपके इस सेशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू रोशन जी, थैंक यू। निसंदेह क्या है कि टेक्नोलॉजी को समझें और हम अपना ब्रेन है वो सबसे बड़ा है, जो दिखावा है चाहे गूगल के रिजल्ट्स हो या सोशल मीडिया हो, हम उनसे घिरे हुए रहते हैं, तो उस साइकोलॉजी में उसमें ना पढ़ करके हम हमेशा ब्रेन को यूज करें। बहुत ही यूजफुल सेशन। वंस अगेन थैंक यू सर फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सर। आशा करते हैं कि आगे के भी सेशंस में जहाँ जहाँ संभावना हो हम आपसे निवेदन करेंगे, थोड़ा थोड़ा हमसे कनेक्ट होते रहिए। जरूर सर, जरूर। इट इज माय प्लेजर। थैंक यू सर। I request to all the participants that we are having a break for about 20 to 25 minutes and thereafter we will again start our second session. So Dr. Nitin Rajvanshi sir will take the second session of the day. So please be with us. Right sir. Thank